Yeah, assalamu alaikum everyone, and welcome to the class. I'll start off as usual with taking any questions from the last class. So let me know if you have any quick questions. By the way, I did upload the slides on Classroom. You should have got a notification for that. Or uske alawa, there's also been an assignment posted on data camp. It's 3 chapters from a ggplot course, and you have until the next Friday for that. Let me know if that's okay, or we can also see if we need a couple of more days after that as well. We can probably extend it to Sunday if needed, but I think it should be enough. It's 3 chapters. It's 3 chapters. One is on the geometry layer. One is on aesthetic layer, and one is a simple introduction. So I hope you should be able to do that. If anybody has already started, let me know if you have any issues there as well. और उसके अलावा लास्ट क्लास में कोई इश्यूज हैं तो वो भी बता दें. Okay, so I'm assuming there are no questions, so I am going to move ahead. Okay, so just to quickly discuss what we did last time. So we started with an introduction to machine learning, and we first of all talked about the two uh, primary goals of machine learning. So we had, first of all, we said we want to do, we usually do it for prediction. And secondly, we said we do it for inference. So anybody would like to tell me what is the difference between prediction and inference? Excuse me, sir. Yes, Talha. Sir, I would like to answer. Predictions हमारी वो आउटपुट होती हैं जो हमारा ये मॉडल हमें देता है, और इन्फेरेंस वो रिलेशनशिप्स थे जो इनपुट्स के साथ इनपुट्स का इफेक्ट था जो आउटपुट पे. If I'm right. Okay, so the two primary purposes why we do machine learning or any kind of or use such algorithms. One is prediction, and prediction is के हमने कोई चीज predict करनी है, as in जो output predict करनी है. For example, we want to detect whether somebody has cancer based on certain data points, based on their blood samples. For example, maybe we may want to predict whether a certain insurance claim, for example, could be fraudulent or not, based on a lot of different factors. So this is a prediction case. Inference would be that you want to understand the relationship between the independent variables and the dependent variables. So for example, if you have a model that has sales as an output variable, you may want to understand how does advertisement affect sales. You may want to understand how does price affect sales, or how does any other relevant variable affects sales individually, right? So inferences के individual independent variables किस तरह से affect करते हैं output को, and prediction is कि आप output की value find करना चाह रहे होते हैं, उसको predict करना चाह रहे होते हैं, ठीक है? So that's the main difference. And then we said there are different categorizations you can do in terms of the algorithms that you have available in the machine learning landscape. So the first categorization was prediction and classification. So any ideas what prediction means and what classification means? Excuse me. Anyone? Yes, sir. Yes, Saveria. प्रिडिक्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होती है हमारे पास, और क्लासिफिकेशन में टू क्लासेस को हम फॉर एग्जांपल हम देख रहे होते हैं कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं है, या ये टाइप ऑफ कैटेगरी है या बी टाइप ऑफ. Okay, yes. So we are primarily concerned with the output variable here. हम inputs की बात नहीं कर रहे, independent variables की बात नहीं कर रहे. They could be either categorical, they could be numerical. That doesn't matter. लेकिन जो output है, if the output is numerical, then we call it a prediction algorithm or a regression algorithm.
And if the output is either binary, as the various suggested, such that it has two possibilities, yes or no, or the other possibilities, it could be categorical as well. Categorical in the sense that having more than two categories. So it could be as many categories as you want, lekin वो numerical नहीं है. ठीक है? So when the output is categorical, you call it a classification algorithm. Okay, so that's the, one categorization. And then we said we could also categorize it in another way, and that would be कि एक जो है हमारे पास parametric algorithms होते हैं, एक we have non-parametric algorithms. So anybody would like to explain what that means? Anybody other than Javeria and Talha? So what are parametric approaches and what are non-parametric approaches? हाँ सर, Yes, sir. तो पैरामेट्रिक अप्रोच में आपको पता होता है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू व्हाट फैक्टर्स आर अफेक्टिंग. तो Okay, so I get you do understand roughly what it means, but anybody would like to be more precise about that? So I'm seeing some names here, so should I just try to call somebody up? So I see Asad, Abdul Wasid, Aisha, Fatima, Ghulam Muhyiddin. Anyone? जी अब्दुल वासिद. सर पैरामेट्रिक अप्रोचेस मुझे तो यही लग रहा है कि we're assuming that ये जो भी function है takes on a specific and fixed form, whereas in non parametric we're not assuming that form, और हमें ज़्यादा data चाहिए होता है क्योंकि हमारे पास वो form मतलब वो rules नहीं है to signify कि ये कैसा function जाएगा, तो उसके लिए we need more data to map it out. Exactly. So parametric approach is where you already, so before you start modeling anything, you assume that this function has a specific form. Okay, so for example, regression के case में you could assume before starting it's a linear model, तो आपको पता है कि आपने एक line fit करनी है, then all you need to do is estimate these parameters कि b0 क्या होगा, b1 क्या हो गया, क्या होगा, and so on. आप coefficients estimate करने हैं, and then it becomes fairly simple, right? So once you start with some assumption about the function itself, that's called a parametric approach. And of course, it's less flexible because आपने पहले से ही एक कुछ assumptions उसको आपने consider कर लिया कि ये linear होगा, ये quadratic होगा, ये exponential होगा, or any particular form. तो जब आपने वो already assume कर लिया, you're trying to fit your data to that function. So it's kind of inflexible in a sense. Non-parametric would be that you do not start with any such assumptions, and you just take in the data and you try to fit whatever function fits best to that particular data set. And in most cases, you might not be able to even understand it very well कि वो exact function क्या है. All it would do is it will take some inputs and give you some output without you having to get into too much detail about what exactly is happening to that particular function. वो से the बहुत complex function हो, which it is in almost all cases, कि आपके लिए वो comprehend करना would not be possible in many cases. तो आपका यहाँ पे purpose सिर्फ ये होता है कि you want to predict an output based on some inputs. Okay, so that's the difference between parametric and non-parametric approaches. And then the last categorization we discussed last time was the supervised learning and unsupervised learning. So remember, ये जो हमने पिछली वाली दोनों categorizations की हैं, these are actually sub classifications of supervised learning. Predictional classification, these are sub classifications of supervised learning, and similarly this parametric approach and non-parametric approach, this is also a sub classification of supervised learning. So there's another type of machine learning algorithm that's called an unsupervised learning as well. So what is the difference between supervised learning and unsupervised learning?
We're mostly going to be dealing with supervised learning in this course. We might touch upon unsupervised at the end if we get time, but mostly we'll be dealing with the supervised learning methods because they're more common as well. Yes, Talha? सर सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास पहले से ही आउटपुट के लिए कोई लेबल्स होते हैं जिन पे आप उसे ट्रेन करना चाहेंगे ताकि वो आउटपुट में उन लेबल्स के मुताबिक जवाब दे। और अनसुपरवाइज में आपको पता नहीं होता कि आपको किस तरह की क्लासिफिकेशन या किस तरह की ग्रुपिंग चाहिए आउटपुट की, तो इसलिए Right. फिर वो क्लस्टरिंग वगैरह जैसी टेक्निक्स होती हैं जिससे अनसुपरवाइज लर्निंग परफॉर्म होती है और आपको आउटपुट खुद ही कैटेगरीज में या ग्रुप्स में बन के सामने आ जाता है इस लर्निंग के बाद। Right, very good. So we in supervised learning we are basically trying to predict something. हमारे पास कुछ output की values होंगी based on some inputs. उस पे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे and we'll try to predict future values in those specific categories के अगर for example yes no के labels हैं prediction के अंदर, तो हम जो future में prediction कर रहे होंगे वो भी हम यही predict कर रहे होंगे कि whether a particular observation or a record is yes or no. Unsupervised learning में you are not really passing on any such information to the algorithm कि अच्छा हमें output क्या चाहिए, आप सिर्फ independent variables उसको दे देते हैं and it tries to figure out itself कि इसमें कोई grouping हो रही है in records के अंदर या नहीं. For example, we discussed the example of customer segmentation last time. कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती है कि आप अपने कस्टमर्स को किस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं in order to meet their needs better. So for example, if you have hundreds of thousands of customers, you may end up grouping those customers into, let's say, 10 to 12 broad categories. और फिर आप जब market करें उनको तो you can market those categories separately. So for example, one category could be these are customers who buy frequently and in large amounts. Then another category could be these are customers that buy frequently, but their spending is much lower. And then there could be infrequent customers, but when they do come, they spend a lot of money. And another categorization could be young families who have certain buying patterns and things like that. So you can actually input all the customer's data into such an algorithm and come up with some groupings of those customers based on how similar they are within the groups and how different they are from people in the other groups, right? So it's basically mostly going to be concerned with clustering algorithms. जहाँ पे आप clusters बना सकते हैं data के in terms of different groups. So that's what we discussed last time mainly. And then we said these are the different machine learning algorithms that are available out there. The more popular ones, of course, there are hundreds of them in actual, लेकिन ये बहुत ज़्यादा commonly used होते हैं. And how they're divided among supervised learning and unsupervised learning. कौन से prediction, कौन से में आपकी output जो है वो numerical होती है, कहाँ पे output categorical होती है, and where you have to take numerical inputs, where you have to take categorical inputs. Of course, right now these are just names for you, since you do not know much about most of them, except probably linear regression. But we'll discuss some of them at least 2 or 3 of them in the next weeks or so. Okay, so let's start with the machine learning process. कि आपका process क्या होता है, starting from the data that you get and to the final deployment of the model that you build. So the steps are that you start with data preparation first. Of course, data preparation से पहले भी the step would be कि आप जो है वो data जो है कहीं से access करते हैं या data import करते हैं. Then you prepare the data, do any data exploration, choose between a lot of different machine learning algorithms. You figure out what is the best model. You do evaluation of the model. Then there's a feedback loop there.
you basically test different models to figure out whichever of them performs best, and then try to see how well it does, and then it's sort of a loop there कि आप उसमें best model choose करते हो जो आप use करते हैं, and then you finally deploy the model. So this is just a quick overview, but we'll discuss each of these steps in detail in the next slides. So for example, in this whole process, आपको जो first step होता है, and that's a very important step, and that is that you first define what is the purpose of your machine learning project. So in that, there are primarily two major things that you would want to consider. And the first is you want to figure out whether it's going to be a one-off effort or it's going to be an ongoing procedure. The reason for this is if something is just a one-off effort, आप बहुत सारी चीजें जो है, for example, the way you code is going to be a bit different. And if it's an ongoing procedure कि आप same model जो है, maybe you want to use it repeatedly every quarter, every month, every year, you may want to be more careful with your documentation when you're coding. For example, आप जो है वो पूरा एक process code करते हैं from starting from data exploration, data cleaning, data exploration and modeling. आप उसको जब code लिखेंगे, you would want कि उसको आप properly comment करें, so that if it has to be used in the future, you are able to understand what you have done previously, और आप उसको अगर कोई updates करनी है वो आसानी से कर सके. So that's one thing that you would be concerned with. And then the second thing is you would want to know कि जो आपने results, आपको final results चाहिए वो कैसे use होंगे. For example, is prediction going to be what you need at the end, or is it going to be more about inference? So if you were to consider an example for in this case, you could think of some bank that would want to know whether the applicants for a loan would default or not, right? So for example, if somebody applies for a loan at a bank, the bank would want to know if they should give the loan to that person or not. अब उसमें वो of course judge कर रहे होंगे कि उनकी probability of default क्या है, and they would want to make a final prediction of yes or no, whether this person is likely to default or whether this person is not likely to default. ठीक है, किसकी probability इसके अंदर ज़्यादा है. Now of course it looks like कि आपको इसमें जो major important चीज़ है, that's prediction कि आपने predict करना है whether the person is going to default or not. But it turns out that a lot of banks would not go for using algorithms जहाँ पे आप inference नहीं कर सकते. For example, you have algorithms like neural networks, deep learning, जहाँ पे you really find it impossible to understand how individual independent variables relate to the dependent variable. So even though such models might give a very good prediction of whether a person is likely to default or not, since the banks would not be able to understand which factors contributed the most to the person being classified as a possible defaulter or not, banks ये नहीं use कर सकते because there are legal repercussions for that. अगर आप किसी को loan, not in Pakistan of course currently, but in many countries what they do is if a bank refuses a loan to somebody citing any reason, the person could actually sue the bank based on their credit history, for example, कि आपने किस basis पर जो है मुझे ये reject किया. So the banks need to be able to justify their decision to whatever authority there is, to whatever regulatory authority there is, कि हमने इस basis के ऊपर ये predict किया कि this person is likely to default. So that's why we have decided not to give him the loan. तो अगर आप इसको justify नहीं कर सकते, they might have to have some repercussions for that. तो उस केस के अंदर फिर आपका इन्फ्रेंस भी जरूरी होगा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंडिविजुअल वेरिएबल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स गेटिंग दैट पर्टिकुलर आउटकम
getting that particular prediction कि वो बंदा default करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? So you have to be careful about what you want at the end. आपको prediction सिर्फ चाहिए या आपको inference भी करना पड़ सकता है. Then the next step would be that you obtain. Yes, somebody wants to say something. Shagufta. Shagufta, can you please mute your mic? Yeah, okay, great. So the next step would be that you want to obtain the data set for the analysis, and there are many different ways of doing that. For example, अगर आपकी internal company का data है तो आपकी जो भी database है वहाँ से data जो है वो import कर सकते हैं, extract कर सकते हैं. In many cases, you need some data sets from some websites, from in some online sources. तो वहाँ पे आपको जो है अगर तो वो डेटाबेस है प्रॉपर, उसके प्रॉपर एक्सट्रैक्शन टूल्स होंगे वो यूज कर सकते हैं. अदरवाइज अगर अपने वेबसाइट से उठाना है तो यू माइट हैव टू यूज सम स्क्रैपिंग टूल्स. डेटा स्क्रैपिंग आपको करनी, वेब स्क्रैपिंग आपको करनी पड़े, एंड देयर आर टूल्स फॉर दैट इन एवरी सिंगल लैंग्वेज. That's generally the second step. You have to obtain the data set for the analysis. After that, the next step would be that you explore, clean and pre-process the data. Data exploration, so of course, if you remember, that's trying to understand the data better, how different variables relate to each other, how your variables of interest depend on some variables based on, for example, आप past data को analyze कर सकते हैं using pivot tables, pivot charts, etc. But apart from exploration, this is actually one of the most important things that you would be doing in terms of your machine learning journey. कि आपने डेटा क्लीनिंग करनी होती है और डेटा को थोड़ा सा प्री प्रोसेस करना होता है बिफोर यू एबल टू यूज एनी मशीन लर्निंग algorithm for this. In almost every kind of real world data set, आपकी पास, for example, आप कोई भी आपके पास data है, you're always going to have some variables that have missing values. ठीक है? You're going to have some variables that have outliers. अब outliers sometimes they may be justified, sometimes वो हो सकता है erroneous values हों, वहाँ पे कोई गलती से कुछ value ऐसी वहाँ पे जो है, because a lot of many times this data is input manually. जब आप इनपुट कर रहे होते हो तो कुछ वेरिएबल्स हो सकता है वो मैनुअली इनपुट होते हो, तो उसमें पे एरर्स के चांसेस भी हो सकते हैं कि उस डेटा के अंदर. सो देयर मे बी सम आउटलायर्स बिकॉज ऑफ दैट. सो आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू कैन डील विद सच केसेस. सो मिसिंग वैल्यूज को आपने मिसिंग वैल्यू से डील करना होता है, आउटलायर से डील करना होता है. सो एनी आइडियाज व्हाट वी कैन डू इफ वी हैव, लेट्स से हमारे पास हमने सेल्स का मॉडल बिल्ड करना है and we have data from the last 3 years. We have daily data from the last 3 years, and let's say there are some days जिस पे हमारे पास एक particular variable का data नहीं है. So price के let's say last 3 years में we'll have about 1050 days approximately, let's say. अब उसमें price की हमारे पास information नहीं है, let's say for 5 days. So what do we do with this? Because a lot of machine learning algorithms would not work very well अगर आप उनको blank values input करेंगे. Some of them might give an error. तो आप इन missing values के साथ क्या कर सकते हैं? सर बजाय के हम उन्हें कोई फिक्स वैल्यू दे दें और वो आउटलायर टाइप बन जाए, या तो हम उन्हें एक प्लेन एवरेज से फिल कर सकते हैं या फिर हम इंटरपोलेट कर सकते हैं वैल्यूज को इर्द गिर्द का डाटा को ट्रेंड देखकर. Okay, so that's a very popular thing that you do कि आप एक तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस की इंफॉर्मेशन अगर 5 days पे मिसिंग है तो आप देख सकते हैं कि अच्छा अगर वो 5 days रैंडमली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द 3 years, आप देख सकते हैं अच्छा व्हाट वाज द प्राइस बिफोर दैट डे और व्हाट वाज द प्राइस आफ्टर दैट डे. बट दैट वुड ऑफ कोर्स रिक्वायर सम मैनुअल जजमेंट. अगर आपके पास ज्यादा इस तरह के मिसिंग वैल्यूज हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स में इस तरह के मिसिंग वैल्यूज हैं, a very simple approach is generally to just find the average of the variable. Otherwise, excluding that particular
वैल्यू, और उस पे आप देख लेते हैं कि आप उस वो एवरेज आप बेसिकली उन सब वैल्यूज पे असाइन कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप प्राइस की इंफॉर्मेशन देखते हैं 3 इयर्स में ओवरऑल प्राइस की एवरेज क्या थी, और वो एवरेज नंबर जो है आप उन सब वैल्यूज को असाइन कर देते हैं। सो दैट्स वन वे you can look at it as well. And there's also another possibility, and that sometimes work well as well if the number of these missing values is not too high, and that is कि आप के पास अगर let's say the same example आपके पास 1050 days का डेटा है, उसमें से सिर्फ 5 ऐसे days हैं जहाँ पे आपके पास प्राइस की information नहीं है. What you could do is you could say you just delete those days from your data, और आप बाकी डेटा को यूज करके जो है अपना मॉडल बिल्ड कर लें, बिकॉज एटलीस्ट दैट्स गोइंग टू बी एक्यूरेट. अगर आप एवरेज लगाएंगे तो दैट्स गोइंग टू बी सम एस्टिमेट देयर. you may want to do this कि आप उन records को ही delete कर दें. So that's another option, but that's only when the missing data is not as in the number of missing values is not too high. या तो बहुत कम missing values हैं, तब ये possible हो सकता है. लेकिन there's also another problem with deleting such rows, and that particularly comes in जब आपके पास बहुत ज़्यादा the number of variables that you have, that's very big. So for example, let's try to imagine this. आपके पास let's say एक data set है जिसमें around for simplicity let's say मेरे पास 100 variables हैं, right? 100 variables हैं in a particular data set, and this happens a lot of times कि मतलब अगर आप average लगाएं ना real level data set में, you could say every variable on average every variable let's say has about 5% missing values. ठीक है, on average every variable has about 5% missing values. So इसका मतलब, और and that those missing values are like randomly spread out across the variables, और हर variable में almost 5% missing values है. अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं कि आप उन records को delete कर देते हैं, do you see any problems with doing such a thing? Because let's say आपके पास हर variable के अंदर सिर्फ 5% data missing है, और आप जो है उन values को delete करते हैं जहाँ पे किसी भी variable की missing value है. Do you think that's a good idea? Would that make sense? Sir, can you repeat the last bit? Oh, connection का मसला हो रहा है. Okay, so let me repeat that. आपके पास एक data set है that has a lot of variables. आपके पास data है जिसमें you have about 100 variables. ठीक है, 100 columns हैं आपके पास. And on average, every column, every variable has about 5% missing values on average, right? Now, what would you think would happen if you were to delete any row in the data, any observation in the data that has a missing value? What do you think is likely to happen? Is that a good idea to delete those rows जहाँ पे missing values हो? Taha, yes? डिलीट करने से डेटा में हमारे बायसनेस भी आ सकती है कि अगर एक कॉलम में वैल्यूज ज़्यादा हैं तो हमारा मॉडल उस तरफ ज़्यादा प्रिडिक्ट करना शुरू कर देगा. अगर किसी कॉलम में वैल्यूज मतलब बहुत कम है, वहाँ पे वो उतना ट्रेन नहीं हो सकेगा. Okay, so that could be one reason, yes. But there's an even simpler reason for this. How many, if you were to delete all such missing values, and starting with that assumption, and that's true for many real world data sets, कि आपके पास एक variable में on average let's say 5% missing values हैं. अगर आप सारी rows जिनके अंदर कोई भी missing value है वो delete कर देते हैं, how much data do you think you would be left with? अगर let's say we started with 100,000 rows, 100,000 rows of data. After deleting all such rows जिनमें कोई भी missing value आ रही है, how much data do you think will be left with? सर डेटा हमारा कम बढ़ जाएगा तो हम अंडर सैम्पलिंग से हो सकती है. नहीं, so my question is how much data do you think you'll be left with? How many rows do you think you might have left
अगर आप सारी वो रोज डिलीट कर देते हैं जहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यू है, assuming we started with 100,000 rows. ऐसे इसमें तो हो सकता है कि सारी की सारी रोज डिलीट आपको करनी पड़ जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि 5% मिसिंग हर किसी में। Yes, so that's a very likely possibility. Of course, that's very pessimistic कि आप सारी rows delete हो जाए, but you can be very close to that कि आप बस almost जो है वो सारी rows ही खत्म हो जाए. And the reason for that is since every column has 5% missing values, आपके पास 100 variables हैं. It's हर वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू की फॉर एग्जांपल मिसिंग वैल्यू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.05 राइट या फिर आप इस तरह देखें कि कोई भी वैल्यू नॉन मिसिंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है दैट्स गोइंग टू बी 0.95 सो इफ यू थिंक अबाउट वन पर्टिकुलर वेरिएबल उसमें एक वैल्यू नॉन मिसिंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.95 एंड यू थिंक अबाउट 100 वेरिएबल्स क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पूरी रो के अंदर एक पर्टिकुलर रो के अंदर कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं होगी दैट्स गोइंग टू बी 0.95 raised to power 100 right 0.95 multiplied by 0.95 multiplied by 0.95 100 times right so that's 0.95 raised to power 100 that's going to be something close to zero so there's going to be very little probability कि कोई आपकी रोज इस तरह की होंगी जिनमें कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं होगी तो आपके बहुत आपका ऑलमोस्ट सारा डेटा ही डिलीट हो जाएगा ठीक है सो दैट्स वन रीजन व्हाई deleting such values may not always be practical ये सिर्फ तब practical हो सकता है कुछ डेटा जो है आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स थोड़े से कम है और the number of missing values is fairly low अगर आपकी missing values ज्यादा हैं you may have to deal with them using by applying some averages और उन missing values को fill कर दें using averages or some other method like आप उससे next value या previous value को देखें सिर्फ उनकी average कर लें or anything like this and then there are outliers में of course the percentage of outliers is not going to be as high as the missing values उसमें आप generally यही करते हैं कि आप उनको एवरेज से रिप्लेस कर दें या आप उनको उन वैल्यूज को डिलीट भी कर सकते हैं because they're not going to be as high in number as such. And then the third thing you generally do when you are pre-processing the data is that you want to scale the data or transform the data in some way. So those of you who have taken the marketing analytics course before, so remember हमारे पास अगर कोई डेटा है सो लेट्स थिंक अबाउट दिस आपके पास हाउसिंग प्राइसेस का डेटा है ठीक है हाउसिंग प्राइसेस के डेटा में देयर कुड बी a lot of different factors that might affect housing price so for example one factor could be that the number of bedrooms you have in a house for example अब उसकी वैल्यू देखें क्या होगी it's going to be like from 1 to let's say 7 8 9 10 right इस normally इसके दरमियान में values range कर रही होंगी right there could be some other variable that is for example the income level the average income of people living in that area in that locality in that neighborhood ठीक है अब इनकम की वैल्यूज क्या हो सकती हैं देयर कुड बी लाइक अगर आप पर ईयर देख रहे हैं या पर मंथ अगर यहाँ पे पाकिस्तान के हिसाब से देखें लेट्स से दे वेरी फ्रॉम 30,000 टू 500,000 और 1 मिलियन ठीक है एक एरिया के अंदर लेट्स से इनकी एवरेज जो है इसके दरमियान में कोई नंबर हो सकता है राइट now think about the number of bedrooms that's a number between between 5 or something think about the salary that's a number in the range of let's say 50,000 60,000 100,000 there's a huge disparity there so in some algorithms अगर आप इस डेटा को पहले normalize नहीं करेंगे such that they are similar quantifiably as in terms of quantity कि उसमें बहुत ज़्यादा differences ना हो some algorithms are going to give more weight to the income variable because उसके numbers बड़े हैं as compared to the number of bedrooms variable because वो बहुत छोटे numbers हैं so कोई भी algorithm जब उसको कुछ algorithms ऐसे होंगे जहाँ पे
आपको उनको पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, एंड विल सी हाउ टू डू दैट लेटर ऑन एज वेल. The other thing you may have to do is after that is कि आप dimensionality reduction करते हैं. Dimension is basically another word for variable. आपके पास जो variables होते हैं आप उनको dimensions भी कह सकते हैं. For example, आपके पास 100 variables हैं, you can call them dimensions as well. उसमें you have to be careful, first of all, that you are not using any variable in your modeling that would not be available in future. So for example, हम last time discuss कर रहे थे about predicting whether a person would have let's say cancer in the next few years. Okay, we want to predict whether a person is likely to have cancer in the next few years. अब हमारे पास जो previous data है, we might have information जो हमारे पास existing data है from the past people, the past cancer patients we have interacted with. We might have information for some of them whether they had any cancer surgery or not. Okay, this could be part of the data. Now, if you were to use that particular variable as part of your model, now this is something that's not going to be available to you जब आप future में कोई predict कर रहे होंगे. आपने किसी बंदे का किसी person के लिए predict करना है whether that person is likely to have cancer or not. Now, in almost every case, अगर आप future के लिए prediction कर रहे हैं, that person would likely not have had any cancer surgery before in most of the cases, right? अब वो data जो है आपका बाद में available नहीं होगा. जो आप already a model में use कर रहे हैं, वो future में you cannot use that particular variable to predict whether that person has cancer or not. So you have to make sure that whatever variables you are using, they're also going to be available in future जब आप predictions कर रहे होंगे. And there's another thing. We talked about having, let's say, 100 variables, or in many cases, it can have 1,000 variables as well. You have to make sure that you only use the variables that are directly, not directly, but they are in some way relevant to your outcome. ठीक है, वो किसी तरह से आपकी outcome को affect कर रहे हैं. They cannot, you have to basically remove any unnecessary variables from your data. This is something that is known as the curse of dimensionality, that most of the machine learning algorithms are not going to perform very well अगर आपके number of variables बहुत ज़्यादा हो जाएं. And there are reasons for that. There are mathematical reasons for that. कि आपके कुछ चीजें जो low dimensions के अंदर, when the number of variables is low, वो किसी और तरह behave कर रही होती हैं. And when you increase the number of dimensions, आपके number of variables बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो things start behaving a bit differently as you would expect. आपकी जो intuitive interpretation होती है उसकी अगर आपकी dimensions बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, those intuitive interpretations actually get a little bit messed up. और वो आपके algorithms की जो कुछ let's say जो processes apply कर रहा होता है उसके ऊपर, they might not make sense जब आपके पास number of variables बहुत ज़्यादा बड़ा हो. ठीक है, so the key point is you have to make sure आपके जो आप number of variables use कर रहे हैं अपने model के अंदर, that's as low as possible. Of course, मतलब keeping in mind कि आप कोई important variables omit नहीं करें, लेकिन you have to make sure कि कोई भी variable जो unnecessary हैं, you make sure you eliminate them from your model. Yes, हम डायमेंशन रिडक्शन इसलिए भी कर सकते हैं ना कि अगर हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, मतलब इतनी स्टोरेज नहीं है, तो हम डायमेंशन रिड्यूस कर लेते हैं ताकि हमारी स्पेस बच जाए. Yes, of course, that's possible there as well. वो dimension के केस में भी हो सकता है, वो आपके number of records के केस में भी हो सकता है. Many times you have such large data sets कि आप उसको process कर नहीं सकते. So what you do is you sample the data and you build your model on that sample data, और फिर आप उस model को जो आपने build कर लिया होता है, then you deploy that on the whole data. So that works both ways. आपकी number of rows भी आप हो सकता है आप reduce करना चाहें उसकी वजह से, और आप number of columns जो है number of variables वो भी reduce करना चाह सकते हैं because of those storage या processing restrictions. Yes, Talha?
सर ये इसमें प्लॉटिंग का कंसर्न भी आ जाता है? प्लॉटिंग तो आप जो है ना यू वोंट बी एबल टू डू मोर देन लेट्स से 3-4 वेरिएबल्स एट अ टाइम। या उससे ऊपर आप जाएंगे वो तो आप उसको विजुलाइज कर ही नहीं सकते ना, दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आप वो जी, तो इसलिए भी डिफरेंट डिडक्शन हम करेंगे फिर? नहीं, that's not necessary. You will not reduce your data to 4 to 5 variables. No, आप जो plotting या visualization करते हैं, that's only for understanding your data, and you can do that a few variables at a time. लेकिन जब आप modeling कर रहे होते हैं, you don't necessarily need to visualize every single variable at the same time. That's not required. And if you do that, your model is not going to work well, because अगर आप सिर्फ 4-5 variables हैं, machine learning algorithms are generally not going to perform very well on such low dimensions, because आपके पास dimensions भी generally थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं। राइट। Acha. And then you may have to, let's say, transform some numerical variables to categorical variables. For example, आपके पास कोई भी numerical variable है, आप कुछ algorithms के लिए, for example, decision trees या regression trees algorithms के लिए आपको numerical variables को categorical में convert करना पड़ सकता है। जिस तरह आप histogram में करते थे, for example, क्या आप 0 से 100 तक कोई वैल्यू होगी तो आप उसकी एक कैटेगरी बना दें 0 to 100, then 100 से 200 के दरमियान जो वैल्यूज होंगी उसके आप एक और कैटेगरी बना दें, so you can convert numerical variables to categorical variables in this way. So that might be needed in some cases, and in some cases you might need to construct new features as well. So again, features, so you have to basically get used to such these terminologies as well. आपके पास एक ही चीज के लिए बहुत सारे different words use हो रहे होते हैं, and you actually need to know all of them, because whenever people are having conversations about such things in meetings and business meetings, they tend to use these terminologies interchangeably. तो आपको सबको पता होना चाहिए है इसका क्या मतलब है. So feature is again just another word for variables. So features, dimensions, variables, all of these are the same thing. So you may have to construct, for example, new variables based on domain knowledge. So a lot of times, अभी हम जो ऊपर बात की, you have to eliminate unnecessary variables to reduce the total number of variables. अब इसमें ये भी हो सकता है in some cases कि आपके पास 3 variables ऐसे हैं कि आप उन 3 variables को किसी तरह से combine करके you can come up with one new variable जो उन तीनों variables को use कर रहा हो, and that new variable would suffice for the previous 3 variables. तो आप वो 3 variables को निकाल के उस एक नए variable को use कर सकते हैं instead. ठीक है, we'll look at this thing later on as well, but this is one thing you can also do. Then once you're done with the data pre-processing, you figure out what type of machine learning you're going to be doing. Do you want to classify something? Do you want to predict something, as in classification task hai, ya prediction task hai, numerical output hai, ya categorical output hai, whether you want to do clustering, whether you want to do time series forecasting. Time series forecasting ke liye, there are some different models. After that, you may have to partition the data. अगर आप जो है supervised machine learning algorithms use कर रहे हैं उसके अंदर you generally partition the data into a training set, into a validation set, and sometimes a test set as well. We'll discuss this today. A training set क्या होता है, validation set क्या होता है, test set क्या होता है, hopefully if you have enough time. Then you choose the particular machine learning technique. So there are many techniques that are available. We saw that in that visualization earlier. बहुत सारी different techniques हैं. You have to choose कि आपने उनमें से कौन सी use करनी है. Once you have used that, अब हर technique के बहुत सारे different variants होते हैं. ठीक है, there are some parameters you have to train. तो आप जो उसको उस machine learning technique को apply करते हैं using the different variants. You see कि उनमें से कौन सा variant सबसे ज़्यादा अच्छा perform करता है, and we'll see अभी के वो किस तरह से performance test करते हैं उसकी. Then you figure out which model is performing better. You go back to the previous step and you try some other variants and see if the performance can be improved further. So it's kind of an iterative process. Yeah, you go back and forth and you try to come up with the model that performs the best. And finally, you deploy the machine learning model
on whatever system you have or jahan pe bhi aapne deploy karna. But generally some of these things are not going to be in your domain as let's say let's say managers of let's say a data science department or an analytics department, but you need to have an overview of how some of these things work. For example, this last thing, these are going to be typically done by developers जो आगे जाके deploy कर रहे होंगे. What you need to do as a manager is कि आपको understanding होनी चाहिए how each of these processes work, ताकि आप उनको exactly precisely उनको guide कर सकें कि आपको हर step पे क्या क्या करना है. So we looked at it as the linear process कि अच्छा आपके पास first step से last step तक आपके किस तरह से क्या क्या आपको process follow करने हैं. But in practice it's not a linear process. It doesn't have to be like this कि आप पहले step 1 करेंगे, then step 2, then step 3, then step 4. It's going to be sort of an iterative process. हो सकता है आपको end पे जाके जो है पता चले कि अच्छा कुछ missing values जो आपने जिस तरह से उनको choose किया था fill करना, that was not a very good idea. उसकी वजह से आपके results खराब हो रहे हैं. You may want to go back and revisit that. At some point you may find out कि अच्छा हो सकता है कि ये variables जो हैं they're not really relevant to my output variable as such. वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे affect भी नहीं करे मेरी output को. So maybe I can just remove those variables from my initial model. So it's an iterative process. आपको you may have to go back to some of the points. You may want to revisit them. ठीक है. So this is the main process that you would have to use for it. Now let's think about. So let's take a 1-minute break here, and let me ask you if you have any sort of questions until this point. So any questions in this whole machine learning process? इसमें कोई आपके कोई confusion हो, let me know. Excuse me, sir. Yes, Allah. सर वो डायमेंशनलिटी रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मतलब आप कह रहे थे कि प्लॉटिंग के लिए वो हमें नहीं रिड्यूस करना चाहिए, हम इससे बेहतर है कि अलग अलग देख लें उन्हें. तो सर मैंने कुछ जगहों में ना पढ़ा कि वो पीसीए और गूगल का अपना एक एल्गोरिदम है टीसनी, तो वो चीज़ जो है वो इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि वो ना हाई डायमेंशनल डाटा को विजुअलाइज कर सकें या पता नहीं क्या. तो मतलब ये यूजफुल है या इसमें कोई लॉस होता है या क्या, फिर ये क्या हिसाब है? पीसी आप जनरली यूज करते हैं फॉर मॉडलिंग पर्पस. ये जो आपके कर्सिव डायमेंशनलिटी जो एक चीज है कि आपके जो है रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज टू बिग. उसके लिए यू टेंड टू यूज पीसीए इन ऑलमोस्ट एवरी डेटा सेट जहाँ पे आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो. तो वो पीसीए व्हाट एसेंशियली पीसीए डज इज के इट टर्न्स योर वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल 100 वेरिएबल्स हैं और वो 100 वेरिएबल्स डिफरेंट चीजें डिपेक्ट कर रहे हैं. तो पीसीए क्या कर सकता है, इट कैन रिड्यूस इट टू एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट यू स्पेसिफाई. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि अच्छा इसको 100 वेरिएबल्स को convert it to 50 variables that would retain most of the information that those 100 variables were giving as much as possible. Of course आप कुछ जब columns delete कर रहे होंगे you will be losing some information, but those 50 variables will try to capture as much information from those 100 variables as possible while also reducing the number of variables. लेकिन जब आपके PCA अप्लाई करेंगे, जो आपके नए 50 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे आफ्टर दैट PCA, वो आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते एज सच. फॉर एग्जांपल वो 50 वेरिएबल्स जो हैं उसमें से किसी भी वेरिएबल का आपको ये नहीं पता होगा कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. तो उसकी विजुअलाइजेशन इट मे मेक सेंस टू
अंडरस्टैंड कि वो स्टेटिस्टिकली कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसकी मैनेजरियल सेंस कोई नहीं बनेगी उसके विजुलाइज करने की. यू विजुलाइज दैट बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि आपका मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. लेकिन जो हम अभी विजुलाइजेशन करते हैं फॉर इन आवर फर्स्ट स्टेप डेटा एक्सप्लोरेशन के केस में, द पर्पस ऑफ दैट विजुलाइजेशन इज वेरी डिफरेंट. वहां पे आप मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं कि अच्छा किन वेरिएबल्स का इफेक्ट है आपके आउटपुट वेरिएबल्स के ऊपर, या किस तरह से वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं. जो आप विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो एक लास्ट स्टेज पे होती है मॉडलिंग के केस में, एंड दैट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ योर मॉडल इज परफॉर्मिंग. और उसकी डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन इस तरह से मैनेजरियल नहीं होती. दैट्स ओनली फॉर मॉडलिंग पर्पसेस. डज राइट, दैट मेक थैंक सेंस यू. फिलहाल? यस ओके. यस इट डज. तो मतलब हम ट्रेंड वगैरह देखने के लिए तब हम इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन के बाद आएंगे. ट्रेंड्स वो डिपेंड करता है. ट्रेंड का क्या मतलब है आपका? अगर आप ओरिजिनल, क्योंकि पीसी के बाद जब आपके वेरिएबल्स आते हैं ना वो इंटरप्रेटेबल नहीं होते. वो आपको उनका मीनिंग एज ट्रेंड सच. ट्रेंड ट्रेंड एज एन मीनिंग नहीं, मतलब कि डेटा का ट्रेंड के मतलब वो उनका लीनियर बिहेवियर है या यस किस तरह से एग्जैक्टली. वो यस. हाँ जी, शेप वो उनकी किस क्या बन रही है. यस यस एग्जैक्टली वो कर सकते हैं. लेकिन उसका वो ये है कि मैनेजरियल इंटरप्रिटेशन नहीं होगी उसकी मॉडलिंग के लिहाज से होगी कि अच्छा हाउ वेल योर मॉडल इज परफॉर्मिंग, या उसकी मॉडल की अगर कोई अजम्पशंस थी तो हाउ वेदर दे आर बीइंग सेटिस्फाइड और नॉट. ठीक है, वो उस पर्पस के लिए होता है. थैंक यू सर. अच्छा, okay, so let's look at this. Bias variance trade-off. So don't get confused with the words for now. We'll figure out what that means. Let's consider this example. So you have this data. So these are x and y coordinates. आपने एक scatter plot बना लिया. So these are two variables that you have, and this is how these points are distributed across these two variables. ठीक है, आपको x variable है, y variable है, and this is the scatter plot for these variables. Now you want to understand how this independent variable affects your dependent variable. Of course, यहाँ पे आपके independent variables बहुत सारे हो सकते हैं. It does not have to be only one. So that's the general case that is represented here कि बहुत सारे variables हो सकते हैं. लेकिन of course for visualization purposes we can only do as much. आप इससे ज़्यादा dimensions में उसको visualize करना 3D में maximum जा सकते हैं, उससे ऊपर visualize करना हमारे लिए possible नहीं होगा. So this is just for understanding how this works. So आपके पास ये independent variable है, ये आपके पास dependent variable है, and you have the scatter plot for these variables showing how the data is distributed across the two variables. अब आपने prediction model build करना है इसके ऊपर. ठीक है. One possibility could be that you try to fit this linear model on this. So remember where it's coming from. This is coming from a linear regression model, for example. ठीक है. आपने एक linear line fit कर दी such that it minimizes the distances, the squared distances, or basically the mean square differences of these points from the line. So to intuitively understand, आपकी जो ये differences हैं इसको minimize करना है सर. ठीक है, that's the idea कि आपकी errors जो हैं ये कम से कम हो. तो आपके पास एक possibility ये है कि आप ये एक तरह से एक linear model fit कर दें. ठीक है, but you can see कि it does not seem to be very good क्योंकि इसमें errors काफी ज़्यादा लग रहे हैं. But that's of course just a random guess. We cannot say for sure. लेकिन लग रहा है कि इसमें errors काफी ज़्यादा हैं. Let's see if there's any other possibility. We could also fit something like this. So this is a high order polynomial. High order का मतलब अभी हम linear कर रहे थे. So this is a polynomial that has let's say power 10, power 15, something like that. X raised to power 15. बहुत ज़्यादा complex कोई polynomial है. ठीक है, and this seems to fit very very well. आप ये हर training data से हर point से pass करें basically. ठीक है, every point is being captured by this polynomial. Now this might be a good fit as well. You could also have this possibility. You could have a quadratic fit like this. आपके पास एक quadratic curve है that passes through the data like this, but of course this also has some errors और इसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे errors आ रहे हैं.
So remember we started from this linear, and it did not seem to capture some of the information that was there in those in that data, in those points that are there. So ye kuch essential information it seems to be missing, right? इस केस के अंदर it's very clear कि even though it's passing through every single point, it's very easy to guess कि ये probably noise भी capture कर रहे हैं, right? So ये जो noise term होती है, this error term here, ये उसको भी capture करे. For example, कुछ differences जो हैं आपके data के अंदर, remember they're always going to be random differences, जिसकी कोई underlying reason नहीं होती as such, they're just random, it's just noise. So ये high order polynomial क्या कर रहा है? It's actually responding to that noise as well, and it's capturing every single data point that is there. ठीक है? So that this is one possibility, and this is another possibility, and it looks like most of the information is being captured by this curve, and there's still some errors that we can assume कि हो सकता है ये noise हो जो ये capture नहीं कर पा रहा. It turns out this is the true function that basically defines these points here. ये true function है जो जिसकी base पर ये points plot हुए हैं, and the rest is noise here. ठीक है? And this is basically how these points were plotted के इस curve की information दी थी, and then randomly थोड़ा सा उस curve से ऊपर नीचे वो points plot किए हुए थे. This is how this data has been generated initially. ठीक है? So this black curve here represents the actual relationship, the true relationship. But of course, this is something that we only know because हमने खुद data ये generate किया. In practice, आपको ये true relationship तो कभी भी नहीं पता होगा. Right? So this is we only know this because हमने data खुद से generate किया है. तो this is our own generated data. We know कि हमने ये curve use की थी, ये relationship use किया था to generate this data in the first place. So we know what the true relationship looks like. But since we would not know this relationship, we have to figure out कि उनमें से linear relationship में से इस जो हमने polynomial जो high order polynomial use किया था और ये जो quadratic use किया था, which of these curves is going to be most appropriate for this data, for this data. ठीक है? So we need to figure out, we need to define a way to choose which of these curves is the best fit. ठीक है? So first of all, let's look at this line here. Line is the straight line. This is a very basic fit. ये बहुत ज़्यादा information captured नहीं कर रहा है इसके अंदर, इस data के अंदर. इस चीज़ को हम कहते हैं that you are basically underfitting your data. So this is very important. Underfitting. आप जो है information जो है उस data के अंदर पूरी capture नहीं कर रहे. ठीक है? आप एक तो है कि आप noise को capture नहीं कर रहे, you don't have to capture the noise, that is one objective. लेकिन आप कुछ inherent information जो data के अंदर थी कि वो इस तरह से इस curve को follow कर रहा था, ये line जो है उसको capture नहीं करी उस information, right? Then we have the second possibility, and that is we had this green polynomial here, and that was passing through every single point. And the problem there was that it was responding to the noise as well. The random variation थी data के अंदर, वो उसको भी capture कर रहा था. This is called overfitting the data. कि आप जो है इतना ज़्यादा flexible हो गए हो कि आपने हर data point से आप pass कर रहे हो. ठीक है? And we'll see what the problems are because of this in the next few slides. So what we did earlier, this is underfitting. आप information को capture नहीं कर रहे appropriately, और इस underfitting को हम एक और word भी use करते हैं, that is called bias, कि आपकी इस जो आपने fit किया model उसके अंदर bias है, because it's far away from, on average it's quite far away from the data points. जो overfitting हो रही है यहाँ पे, इसका ये we also use another word that is called variance, कि आपके जो predictions होंगी उसके
जो है variance, all of you have seen that before. Variance हम किसके लिए use करते हैं? To measure spread in the data. इस overfitting को हम variance भी कहते हैं कि आपके डेटा में बहुत ज़्यादा variance होगी, ठीक है? This is just another word for overfitting. And this quadratic fit, it sort of feels just about right, ठीक है? But we only have figured this out abhi is case ke andar because we knew what the true function was. How can we judge whether a fit is right given that we do not know what the original function was? हमें ये black curve नहीं पता होती, तो how would we judge कि इनमें से कौन सा model जो है that's going to be the best fit? So that's what we are going to discuss abhi. So generally, let me ask you, if you were to be dealing with regression, how would you judge whether a regression is giving you a good fit or not? So we have done this before. How would you judge this? Regression में कुछ ऐसा होता है जो आपको बता रहा हो कि whether it's good fit or not? सर हम फिर उसमें कोई एरर errors हो देख सकते हैं? सकते हैं। Yes, Taha? हम एरर देख सकते हैं। हम इस केस में हम जिस तरह मीन स्क्वेयर एरर ले सकते हैं। Okay, so one possibility is आपके पास regression output में आ रहा होता है एक mean squared error. So जितने वो errors low होंगे, the better fit your model is going to be. And there's also something else that you see in your regression output. Okay, The confidence interval, sir. Confidence interval. Confidence interval. You can think of it this way कि अगर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रेडिक्शन का छोटा है, एज एन इंटरवल छोटा है तो उसमें उसका एक्यूरेसी ज्यादा हो, इंटरवल बहुत बड़ा है तो उसमें एक्यूरेसी कम हो. बट देयर इज अनदर थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर. आपके पास एक सिंगल नंबर होता है दैट यू बेसिकली यूज टू से कि आपका प्रेडिक्शन जो है इस मॉडल पे कितनी ज्यादा एक्यूरेट होगी. आई एम होपिंग somebody from BSMT tells me that because I taught you this 2 years back, but I'm guessing कि आप लोग सब कुछ भूल चुके हैं. तो regression में क्या होता था? Prediction की accuracy के लिए what number did you used to look at? Jaleed? R, sir. R. Okay, we have R square there. R square की value होती थी. That used to explain कि how much variation in the data is actually explained by your model. ठीक है कि आपका मॉडल कितना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है आपकी आउटपुट को. सो आर स्क्वायर जितना हाई होता था, वी वुड से द प्रेडिक्शन इज गोइंग टू बी मोर एक्यूरेट. अच्छा, Azhar, I've just seen your question about web analytics. Let me come back to it once we are done in 10 minutes. I'll come back to that. Acha, how can we? So let's think about this. So that's what we used to do in statistics. Some mean squared errors use करते थे based on कि जो भी हमने model build किया उसमें errors कितने आ रहे हैं, उसमें जो है R square क्या आ रहा है. In machine learning, we actually tend to use something that's inherently different. And that is, and you're going to see this in every single kind of machine learning model that you use, कि आप अपने data को split करते हैं into multiple sets. For now, I'm just going to do it with two sets of data, as in आप one single split में आप दो parts में data को divide करते हैं. One is the training data and the other is validation data. So let me explain what this means. आपके पास ये data है. So you have the x-axis here, you have the y-axis here, you have the data points here, and all of the data is here like this. Of course, ये बहुत कम data points and actually you're going to have a much larger data set, but it's just for illustration. What you would tend to do to evaluate whether a model is performing well or not, you would basically divide this data into two parts. Okay? So let's assume for simplicity now that you divide it into two equal parts. So आपने randomly data को split कर लिया such that some of this data is going to be
training data. So let's say these blue dots, this is my training data, and these white dots here, or these gray dots here, these are my validation data. So basically what it means is कि ट्रेनिंग डेटा जो होगा मैं अपना मॉडल उस डेटा के ऊपर बिल्ड करूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू टेस्ट ऑन द वैलिडेशन डेटा कि वो मेरा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म करे. एंड दिस इज वेरी पावरफुल. जब स्टेटिस्टिक्स में करते थे आर स्क्वायर यूज करते थे और मीन स्क्वायर्ड एरर्स यूज करते थे, दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन लॉट ऑफ assumptions as well. और अगर वो assumptions आपकी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा जो है वो satisfy नहीं हो रही, तो you might not get very accurate results. You might not get very good results. Machine learning में you are not taking any such assumptions. आप actual data पे test करते हो कि आप actual untouched data पे test करते हो कि whether your model is actually performing well or not, without having any other assumptions. आपकी सिर्फ एक assumption है कि आपने जो जिस तरह से आपका previous data randomly आपने जो है वो gather किया था, your future data is also going to follow the same pattern. That's the only assumption that you're using, कि आपकी future में data gathering की या data उसकी कोई assumption जो है उसका process जो है वो बिल्कुल change नहीं होगा. That's the only assumption that we are considering here. So you split the data into two parts like this, and what you do is you have this training data here on the left side, and you have this validation data here on the right side. अब आप training data के ऊपर अपनी curve fit करेंगे, या जो भी आपका model है model आप fit करेंगे. So one option is we have this linear model. अब let's say आपने training data ये use किया, इसके ऊपर your linear fit comes out to be, for example, let's say आपकी horizontal line आती है इस तरह, ठीक है? You test that horizontal line on this validation data, and you try to look at, you could look at again the mean square differences here. Differences basically measure कर रहे हैं. I'll come to that as well. Can mean square difference exactly क्या होता है? If you don't remember that, we'll come to that as well in the next session. But for now, just understand it intuitively like this कि आपकी distance कितना ज़्यादा है in points का from this line, ठीक है? तो आप validation set में यहाँ पे rather than seeing the distance from the training set जहाँ पे आपने model train किया था, जिसको आपने model build करने के लिए use किया था, you actually test it on a separate data set जो आपने already पहले separate out कर लिया था, and you test your model on that data कि आपका मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है? This is what you generally do in machine learning. कोई भी आप मॉडल यूज कर रहे हो. So you do this using the straight line. You could do this using that high order polynomial. So remember, ये high order polynomial क्या करता था? It was fitting your data exactly. जो भी आपका training data था उस पे exactly वो हर point को capture कर रहा था, right? And we said it's possible कि ये noise को capture करे. Of course, उस time पे we did not have any evidence to suggest that कि वो वाकई noise को capture करे या information को capture करे. But in this case, we can actually test that. हमने training data को separate कर लिया. We built our model on this training data, and then we test it on those points जो हमने separate out कर लिए थे. And then you see ये जो validation set है, ये तो उस पे बिल्कुल भी it's not predicting very well. इसके देखें ये एक point से it's very close, yeah, it's passing through that, but the rest of the points are like they do not follow this curve at all. ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे differences आ रहे हैं. So again, this might not be a very good fit. But of course, इसको आप quantify करेंगे by calculating those errors and then finding out कि आपका error कितना आता है, and then you compare it with the other options. And then this was the third option. आपने training data के ऊपर एक quadratic model fit किया, and you test it on the validation set, और इसमें आप again वो errors measure करते हैं जो आपके पास आते हैं, ठीक है? And then you see whichever model gives you the least errors, that's going to be the model that you would choose as your best model. और फिर आप उसके ऊपर अपनी जो है predictions करेंगे for future data. ठीक है? So this is what you generally do in machine learning. You divide your data into some training data and some validation set. Validation data, you build, you train your model on this training data, and
you train different models. आपके पास multiple options होंगी models की that you train on this training data, and then you test which of those models performs the best on this validation set, और फिर आप उस model को choose करते हैं that is performing the best. ठीक है? So let's go through it step by step. You split the available data into a training set and a validation set. आपके पास multiple models हैं जिसमें से आपको एक select करना है. Now this split is not as इसका कोई standard method नहीं होता as such. It's not always 50-50. So there are a lot of conventions that people use, but there's no as in set rule for this. Some people tend to use 50-50. Some people tend to use 2/3 for training, 1/3 for validation. Some people tend to use 75-25. So it varies, and there's no standard rule for this. But generally, what happens is if you have let's say the amount of data that you have in total, if that's not too big, so you would want कि आप अगर आपका especially अगर आपका model कोई ऐसा है that requires a lot of data, for example neural networks, they require huge amounts of data. Yeah, even some of the other algorithms like support vector machines or they might require a lot of data as well. और अगर आपके पास data original data ही बहुत बड़ा नहीं है, so you might want to use a significant amount of that for training ताकि आपका वो मॉडल अच्छा ट्रेन हो. So you may want to use 2/3 or 75 in that case, for example. लेकिन अगर आपके पास data set बहुत बड़ा है, then 50-50 would work as well. That's also fine. So again, there's no as in one single answer to this. It's going to be your own judgment कि आप कौन सा जो है split use करें. अगर आपको बहुत ज़्यादा training data चाहिए और आपका original data बहुत छोटा है, you would prefer a higher percentage of training. Otherwise 50-50 would also work. So the next step would be you fit each of those models separately on the training set. You evaluate each model on the validation set. So remember आपने fit किस पे किया है training के ऊपर, evaluate किस पे करना है validation set के ऊपर. ठीक है? And then you choose the model that performs the best on the validation set. So remember, पीछे case में, this curve was performing the best on the training set. इस पे देखें ऐसा कोई error नहीं है, zero error इस curve का. However, validation set के ऊपर it's not performing as well. Quadratic में it's not a perfect fit for training data. It's not a perfect fit for validation set either. लेकिन आपने क्योंकि validation set unseen था और future में जो data आएगा that's also going to be unseen for you, तो आप this performance on the validation set is more reliable. तो आपने इसके ऊपर judge करना है which model is performing the best. Once you're done with choosing the best model, अब आप क्या करेंगे, आप पूरे data को combine कर देंगे. ठीक है? और आप जो आपने जो best model choose किया था, अब पूरे data के ऊपर वो model दोबारा train कर लेंगे. Because now you know which model is performing the best, so you would want to use the whole data for training that model now. Talha, yes. Sir, ट्रेनिंग और वैलिडेशन के जो है ये टेस्ट डेटा से अलग चीज है ना? Yeah, test data is different. We'll discuss that in the next session, but that is different. ये मॉडल सिलेक्ट करने के लिए हमने ये टेक्निक यूज की है, फिर Yes. हमने ये सारा डेटा यूज करना है मॉडल को फाइनली ट्रेन करने के लिए जो भी हमने सिलेक्ट Yes. किया मॉडल. Yes. That's true. Yeah. So validation set हम use करते हैं model select करने के लिए. कौन सा model is going to performing the best. Model selection के लिए हम validation set use करते हैं. ठीक है? सर इस पे लिखा हुआ है द ट्रेनिंग सेट वैलिडेशन सेट अप्रोच. इसके अलावा भी कोई अप्रोच है इस काम के लिए? Yes, so you actually can split the data into 3 parts, and one is training, one is validation, one is test. वो हम next class में देखेंगे why we do that. वो मॉडल सिलेक्शन के लिए नहीं है या वो मॉडल सिलेक्शन के लिए ना वो है मॉडल आपने सिलेक्ट कर लिया, मतलब मॉडल आप फिर भी वैलिडेशन को यूज करके सिलेक्ट करेंगे, बट देन यू हैव अ टेस्ट सेट जिसको यूज करते हैं कि आप ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि फ्यूचर में आपकी परफॉर्मेंस कितनी एक्यूरेट होगी. दैट्स व्हाट वी यूज दैट फॉर. we'll discuss कि उसके लिए हम वैलिडेशन सेट क्यों नहीं यूज कर सकते to predict future performance, why we need a separate set for that, separate data for that. We'll discuss that in the next class. Achha, just the last thing for today, just to
understand that point even better. आपके पास let's say ये data है, so it's a different data from what we had before. You have these different points here, and we have different curves here. ये जो black function है इसके अंदर, black curve that you are seeing, that is the true function. Of course, you're not going to know that practically जब आप actual में real life में वो कोई भी model build कर रहे होंगे, you're not going to know that true function beforehand. But in this case, this is the true function, right? And then you have different candidate functions that may work well for this data. For example, you have a linear fit, जब ये straight line है, that's one possibility. You have a third order fit, यानी cubic function है एक, that's this blue function here, ये जो blue curve आ रही है, ठीक है, that's actually very close to the true function. And then you have a high order fit जिसमें मतलब x की power जो आपके variable है उसकी power बहुत high है, let's say it could be 10, 15, 20, whatever, उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह से wiggly सा वो curve है, with a lot of turning points, and it's passing through, and it's actually close to most of the data points in this case. What happens is आप ये right side वाले जो graph देखें, ये जो red curve है ना, ऊपर वाला curve जो है, that's for the validation error, and this curve that's below, that's for the training error. So initially जब आपकी flexibility, so x axis पे you have flexibility, y axis पे you have the errors that you're getting, mean squared error. So flexibility means कि आपका जो model है, how flexible is that. For example, high order fit is the most flexible because ये बहुत ज़्यादा closely follow कर रहा है उसको. Linear fit is the least flexible. ठीक है, so flexibility इस case में क्या measure कर सकती है? For example, 2 could be a quadratic function, 3 could be a cubic function, 5 could be a function that has power 5, and so on. या फिर it could be something else as well. ठीक है, so as you go on the right side here, flexibility increases and your complexity of the function also increases, or either y-axis पे you have the errors. So basically when you start, आपकी जब low flexibility है, both the training error and the validation error, they're going to be high. ठीक है, अगर आपका मॉडल बहुत ही ऐसा सिंपल सा मॉडल है, आपके errors are going to be higher, both for training. For example, linear model के अंदर training set में भी आपके errors high होंगे, validation में भी high होंगे. But then as you increase the flexibility and you move to something more complex, your training sets error decreases, and also your validation sets error increases. But after some point, you can keep on decreasing the training error. जिस तरह हमारे पास यहाँ पे हुआ था, आपका training error 0 हो गया इस केस में. लेकिन if you keep increasing that flexibility, this model is not going to perform as well on the validation error. So after some point, ये देखें, आपका validation error उस point से फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, because आप training data के ऊपर overfit आपने करना शुरू कर दिया. So right side पे it's basically overfitting, left side पे it's underfitting. Somewhere in the middle here you have the optimal point, जहाँ पे आपका validation error जो है वो lowest आ रहा है. So that's going to be the model that you would choose. So left side पे underfitting हो रही है, you're not being as flexible as you need to. यहाँ पे right side पे you're overfitting to the training data, you're being overly flexible on the training data, जिसकी वजह से आपकी validation के ऊपर performance is not very good. ठीक है, so let's stop here, and in the next session we're going to discuss something else as well. What Talha asked there, कि test set आप कहाँ पे use करते हैं, क्यों use करते हैं, ठीक है? So let's stop here, and let me know if you have any questions. If anybody wants to leave, we are done for today, and I'm only going to be taking questions after this. Okay, so first of all, before I take any new question, I'm going to ask Azhar and ask him to clarify his question a bit. So web analytics से आपका क्या exactly मतलब है, Azhar? Web analytics में आप करना क्या चाह रहे हैं? There are a lot of things you can do in web analytics, लेकिन आपका purpose क्या है? Is Azhar here? Okay, I think Azhar has left. Okay, so any other questions?
सर वो मैंने चैट में लिखे हैं क्वेश्चंस अपने. Okay. So, what is the use of different error metrics? R squared, MSE. This is a p-value different from R squared. Talha, these are questions on regression specifically. We can discuss them individually. These are not related to what we're discussing right now. That would be something off the topic. तो हम उसको अभी बाकी question address करके I'll come to that. Okay. Yes. Any other questions? Any other questions on this? Any questions? Okay, Abdul Basit, does Azhar have a TSF? नहीं सर, अजहर की तो नहीं है, जलीद और असद की है. अच्छा, आपकी नहीं होती थी? मेरी भी है सर, मैंने कहा मेरे अलावा आप कह रहे हैं. अच्छा ठीक है, सही है. Okay, so I was just looking for his question. चलिए ठीक है, वो फिर बाद में उसको आंसर कर देंगे. So if anybody else does not have a question, I will get to Talha's question then. Acha, different error metrics. R squared MSC. Acha, R squared error metric नहीं है as such. R squared is basically used to regression के case के लिए specific होता है. R square आपको ये बताता है, आपको कोई भी regression model है ना. So for example, let me show you a regression model here. We looked at one of those models somewhere. Yeah, so this is a regression model here. आपके पास left side पे एक output है, on the right side you have some variables x1 until xp. ये independent variables हैं. R square basically tells you कि how much of the variation in the output variable. So basically let's say आपकी output जो है वो sales है, ठीक है. अब sales depend करती हैं on a lot of different factors, ठीक है. आपने अपने model के अंदर let's say 3 variables include किए हैं. आपने जो है price include किया है, आपने advertisement include किया है, आपने let's say promotions include किया है, ठीक है. 3 different variables हैं जिनकी basis पर आप sales predict कर रहे हैं, ठीक है. And sales is the output variable. These variables on the right, these are your independent variables. Now, whatever is the output that you get from that regression model, आपका जो R square है, R square आपको ये बताएगा how much of the variation in sales, कि sales जो है, अगर आपके पास let's say 3 साल का data है, monthly data, over different months आपकी sales vary कर रही होंगी, right? किसी मंथ पे कुछ सेल्स होंगी, किसी मंथ पे कुछ सेल्स होंगी, एंड देयर इज गोइंग टू बी सम वेरिएशन इन दोस सेल्स, ठीक है. अब आप एस्टिमेट क्या करना चाह रहे हैं, आप समझना क्या चाह रहे हैं, जिसके लिए आप ये मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि वो जो वेरिएशन है वो किस वजह से हो रही है और आप किस तरह से उस वेरिएशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, राइट. सो बेस्ड ऑन द मॉडल दैट यू हैव बिल्ट, आपने जो प्राइस यूज किया, आपने एडवर्टाइजमेंट यूज किया, आपने प्रमोशन यूज की, R square tells you how much of that variation in your sales is explained by your model. So for example, if you have an R square of 0.75, you would say this model explains 75% of the variation in your sales. The other 25% is unexplained. Your model does not capture that variation, and there could be different reasons for that. It's possible कि आपने linear model assume किया था और असल में a quadratic model might fit better, जिसकी वजह से वो बाकी variation explain नहीं हो रही. It's possible कि बहुत सारे ऐसी variables हैं जो sales को affect करते थे, आपने उसको include नहीं किया अपने model के अंदर, उसकी वजह से वो हो सकता है कि बाकी 25% explain नहीं हो रही हो. So it's never going to be 100% because you can never predict with 100% accuracy. But the idea is कि जो भी आपके वो number होगा, that is the amount of variation that you explain, that your
model explains of the output variable. Okay, that's what R square means. Mean squared error, that is basically कि आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनका एरर मेजर करते हो, आपकी एक प्रेडिक्शन होगी और आपकी एक एक्चुअल वैल्यू होगी, आप हर एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्शन वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करते हो एंड यू फाइंड व्हाट इज सो मैथमेटिकली आप ये कर रहे होते हो कि आप उनको स्क्वायर करते हो, उन सबको ऐड करते हो डिफरेंसेस को, देन उनका स्क्वायर रूट लेते हो और उनकी एवरेज लेते हो, फिर उनका स्क्वायर रूट लेते हो. And that basically intuitively what that tells you is कि आपका on average error कितना है, actual और prediction में आपका difference कितना आ रहा है, error कितना आ रहा है. ठीक है, calculation में हम वो square इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ errors जो है वो negative होते हैं, कुछ errors positive होते हैं, तो in order to make sure कि वो सारे जो हैं वो plus minus जो हैं वो एक तरह से cancel out होके zero ना हो जाए, we square those differences ताकि all of those differences are accounted for. So mean square error आपको बताता है कि how accurate your performance is in the terms के actual आपके जो numbers हैं वो कितने दूर हैं on average from your predictions. ठीक है, that's what mean square error means. P value इनका is पर्पस एक जैसा ही नहीं हो गया इन दो एरर्स का? So again, R squared is not an error. R square is calculated using mean squared error. Okay, so these are different, two different basically measurements. Yeah, different terminologies that are used. So R squared आपकी prediction accuracy के लिए use होता है. Mean square errors के आपकी errors कितने हैं आपके data उसके prediction के अंदर. So essentially आपका end पे final वही हो सकता है, लेकिन mean squared error में उसका होता है कि benchmark नहीं होता कोई as such. For example, let's say I'm getting a mean squared error of 1500. ठीक है, अब there's no benchmark to that कि अच्छा 1500 is that a low number, is that a high number, how would I know? किससे compare कर रहे हैं? 1500 is very low as compared to let's say 15 million, but 1500 is very high as compared to 150. So what is the benchmark? We don't have any benchmark there. R squared के case में that's actually a standardized number जो हमेशा जो है ना 0 और 1 के दरम्यान में होता है. So the closer it is to 1, we say the better your prediction is. The closer it is to 0, you generally say your prediction is not as good. ठीक है? Right. Thank you, sir. Okay, p value is actually very specific to regression and statistics. उसमें हम अभी detail में नहीं जा सकते. I think the rest I've explained. Yes. Any other questions? Okay, बस ये था कि ये R squared और explained variance एक ही चीज होती है या? Yes. So explained variance, yes, you can say that. So that's how you define R square. ठीक है. लेकिन एक्सप्लेन्ड वेरिएंस मतलब एक्चुअली अगर मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे ना, वो तो एक नंबर होता है जो आपके आउटपुट में आता है, लेकिन देयर इज नो वे टू इंटरप्रेट दैट डायरेक्टली. वो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस भी जो है ना आर स्क्वायर की कैलकुलेशन में यूज होता है. ठीक है, सो द मेन थिंग यू नीड टू नो अबाउट इज आर स्क्वायर्ड एंड एमएससी इन द सेंस कि आपको ये पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है बस. ठीक है सर, थैंक यू. ओके, any other questions? Okay, I'll wait for a couple of minutes and then we can end otherwise. Abu Bakr, can you please stay back once we are finished with this? ठीक है sir. Okay. Okay, any other questions? Okay, so let's stop here then, and let's continue with this next time, inshallah. Allah Hafiz.
office.